This is NJ. Welcome to English speaking class. Guys, girls, my students, Assalamu alaikum, marhaba, sabah al khair, how привет. Dear students, today we are going to view the use of adjectives of quantity and use of adjectives of number. Adjectives of quantity and adjectives of number are commonly used in speaking, and these are also taught in academic studies in schools and colleges. Let's start our lesson behind on the whiteboard. अजीज अब्दुल्ला, आइए व्हाइट बोर्ड पे आज हम एडजेक्टिव्स के बारे में, एडजेक्टिव्स जो मिकदार को और नंबर्स को ज़ाहिर करते हैं, इस्माए सिफात, मिकदारी इस्माए सिफात और अद्दी इस्माए सिफात, आज उन्हें हम देखते हैं और इनसे जुमले बनाने की प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं. Here see my students, use of little, much and many. Little, much and many. These are three adjectives. Little and much are adjective of quantity. Little and much are said to be adjective of quantity. Little और much जो है ये इस्माए सिफात मिकदार कहलाते हैं. Whereas many is said to be adjective of number. Many is said to be adjective of number. Many के मानी उर्दू में बहुत से के होते हैं और इसे adjective of number अद्दी इसमें सिफात कहा जाता है. Let's start with the little. You see the little. Little mean कम. Little के मानी होते हैं मिकदार में कम. मिकदार में कम. Little के मानी जो है मिकदार में कम के लिए जाते हैं. Less in quantity. In English you can say less in quantity. थोड़ी मिकदार में, यानी मिकदार में कम. तो little जो है इसके मानी मिकदार में कम के लिए जाते हैं. Little is an adjective of quantity. So ये क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है, little मिकदार को, और इससे जुमला बनाते हैं. There is, you see my students, there is there, you see there is, you see that there is a subject in this statement, in this sentence. There is an adverb of place. There is an adverb of place, and in this sentence it is used as a subject. यहाँ पे there जो है फाइल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और इसे adverb of place कहा जाता है. किसी मकाम को जो है वक़ू को ये ज़ाहिर करता है. There is a little water in the jug. There is a little water in the jug. Little. There is a little water in the jug. So you see my students, there is a little water in the jug. So in the glass, in the jug, you can say jug is a pot and used here as an object. There is a little water in the jug. We have to add water here. There is a little water in the jug. So you see my students, there is a little water. We add here water, make a fraction. There is a little water in the jug. So here see this statement. There is a little water in the jug. You see, there is a little water in the jug. जग में थोड़ा सा पानी है. So
This sentence explains the meaning of little. There is a little water in the jug. जग में थोड़ा सा पानी है, यानी जग में गुंजाइश के मुताबिक पानी की जो मिकदार है वो कम है. So little is an adverb of quantity. So ये मिकदार को जाहिर करता है. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी मिकदार को कहते हैं QUANTITY. So here is a little water in the jug. जग में थोड़ा सा पानी है. You see there is a subject in this statement, in this sentence, or there itself is a adverb of place. ये मकाम को, वकूअ को ज़ाहिर कर रहा है. वहाँ पर जग में थोड़ा सा पानी है. Is a helping verb. A is an article. आर्टिकल जो है ये सिंगुलर नाउन को जाहिर करने के लिए, सिंगुलर नाउन को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो a little water. So water is नाउन. थोड़ा सा पानी. A little means थोड़ा सा. Water पानी. In is a preposition. In is a preposition and the jug is an object. There is a little water in the jug. जग में थोड़ा सा पानी है. So in this sentence little is used as an verb of quantity. So ये मिकदार को जाहिर करता है, यानी किसी चीज़ की मिकदार को little जो जाहिर करता है. Let's set another example. आइए एक और मिसाल देते हैं. You see there is next example we write here. We start from here. You see my students, there is little milk, LITTLE. There is little milk in the tea. 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 चाय में दूध की मिकदार कम है. चाय में दूध कम है. There is little milk in the tea. टी चाय को कहा जाता है. और यहाँ पे भी देखिए there is a adverb of place. Is a helping verb and little means less. Little is an adjective and it has 3 degrees. Positive is little, comparative is less, and superlative is least. Little, less, least. So milk is a noun and little points out the quantity of milk. Little जो है दूध की मिकदार को यहाँ पे जाहिर कर रहा है. और दूध किसमें? चाय में. In the tea is object. In is a preposition. The tea is object. In the tea. चाय में दूध थोड़ा सा है. चाय में थोड़ा सा दूध है, यानी ना होने के बराबर है. चाय में दूध ना काफी है. चाय में थोड़ा सा दूध है. So you see my students, we have beautifully explained the use of little in sentences. Let's see the next word, that is much. much के मानी जो है, ये much भी मिकदार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्वांटिटी के लिए. much के मानी है मिकदार में ज्यादा. much होता है ज्यादा. much मिकदार में ज्यादा. much के मानी जो है वो ज्यादा के लिए जाते हैं, यानी जरूरत से, गुंजाइश से ज्यादा. तो मच जो है ये ज्यादा के माने में आता है.
मिकदार में ज़्यादा, much. So you see the next adjective of quantity is much. So much मिकदार में ज़्यादा, little मिकदार में कम और much मिकदार में ज़्यादा. ठीक है, let's use it in a sentence. आइए much का इस्तेमाल जुमले में करते हैं. Let's see. You see my students. Here we write here. There is much sugar. There is much sugar. M-U-C-H. Much. There is much sugar. S-U-G-A-R. There is much sugar in the pot. In the pot. बर्तन में चीनी ज़्यादा है. There is much sugar in the pot. In the pot. चायदानी में चीनी दान में शुगर जो है ज़्यादा है. There is much sugar in the pot. चायदानी में या चीनी दान में शुगर ज़्यादा है. There is much sugar in the pot. So there is again adverb of place. Is a helping verb. Much is an adjective. Much, more, most. Much is a positive first degree, and more is a comparative second degree, and the most is बर्तन में चीनी ज़्यादा है. There is much sugar in the pot. बर्तन में चीनी ज़्यादा है. There is much sugar in the pot. बर्तन में चीनी ज़्यादा है. Let's set another example. Let's set another example. आइए एक और मिसाल देते हैं. Here see my students. There is much sugar in the pot, and another example you see here. Next example is there is. You see my students, we write here. There is much salt. There is much salt in the curry. There is much salt in the curry. There is much salt. S-A-L-D. There is much salt in the curry. There is much salt in the curry. सालन में नमक ज़्यादा है. करी, C-U-R-R-Y. करी सालन को कहते हैं. सालन जिसमें शोरबा हो, सूप हो, शोरबे वाले सालन को करी कहा जाता है. There is much salt in the curry. सालन में नमक ज़्यादा है. You see my students again. There is an adverb of place. It is a helping verb. Much. Much. यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. मिकदार को जाहिर करता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. There is much salt. Salt नमक को कहा जाता है. And in the curry, ये जो है in preposition है, the curry object. There is much salt in the curry. सालन में नमक ज़्यादा है. So my students, you see that we have illustrated the use of much in this sentence beautifully. So in these sentences we have illustrated the use of much beautifully, and we have its explanation as well. And let's proceed to the next adjective. This is many के माने होते हैं बहुत से. मैनी के उर्दू में माने लिए जाते हैं. बहुत से के माने लिए जाते हैं. मैनी के बहुत से. तो ये you see my students, बहुत से. ये बहुत से के इसमें लिया जाता है. बहुत से. मैनी बहुत से के उसमें माल होता है. बहुत से. और ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसे कहा जाता है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर. वो लिटिल एंड मच आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और जो है मैनी जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. तो यहाँ पे हमने ये इस्तेमाल देखा मच का. तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था. हम इसे
AJD लिखते हैं एब्रीविएशन के तौर पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और ये मिकदार को जाहिर करता है, क्वांटिटी QUANTITY, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और ये यहाँ पे आप देखिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमने लिटिल का इस्तेमाल किया, लिटिल भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यू मे से दैट इट एज वेल यूज्ड एज एन एडवर्ब। सो यहाँ पे अगर हम लिटिल, लेस, लीस्ट, इसकी तीन जो है हालतें लें तो इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये, तो इसको हम यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पे जाहिर कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो लिटिल और मच जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं, जबकि मैनी जो है, मैनी, मोर, मोस्ट, मैनी आल्सो हैज 3 डिग्रीज। पॉजिटिव है मैनी, बहुत से, मोर मजीद ज़्यादा और ज़्यादा, और मोस्ट इंतहाई ज़्यादा। तो इसकी मैनी की भी 3 डिग्रीज है, ये भी एडजेक्टिव है। मैनी मोर मोस्ट, तो इसकी भी 3 डिग्रीज हैं, तो ये चीज के तौर पे इस्तेमाल होता है। आइए स्टूडेंट्स, मैनी का हम जिक्र कर रहे थे, तो मैनी जो है ये एडजेक्टिव ऑफ जो है नंबर के तौर पे इस्तेमाल होता है, मैनी। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ये देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो ये तो हम लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मैनी, मैनी मोर मोस्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तौर पे इसे हम यहाँ लेते हैं। और इसको थोड़ा सा क्लियर करके हम लिखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ये हमारा आ गया यूज ऑफ मैनी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अददी, तादाद को जो जाहिर करे उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, जो तादाद को जाहिर करे किसी चीज़ की, किसी भी नाउन की, इसम की, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। अददी, इस्म, सिफात, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो मैनी जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है, मैनी इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेट्स सेट एन एग्जांपल विद मैनी। सो यू सी, वी राइट द एग्जांपल हियर, देयर आर मैनी बर्ड्स, वहाँ पर बहुत से परिंदे हैं। देयर आर मैनी बर्ड्स, देयर आर मैनी बर्ड्स। यू सी माय स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी बर्ड्स, वहाँ बहुत से परिंदे हैं। There are many, M-A-N-Y, there are many birds, वहाँ बहुत से परिंदे हैं। You see, it's many। और आगे हम birds का इजाफा करेंगे, there are many birds, वहाँ पर बहुत से परिंदे हैं। तो in this sentence, you see my students, there is an adverb of place, वहाँ, इसके उर्दू में माने लिए जाते हैं वहाँ के। There are many birds, वहाँ पर बहुत से परिंदे हैं। So you see, there is bird, birds. So there जो है, there is adverb of place. So ये मकाम को, वकूफ को जाहिर करता है। And is a helping verb, is a verb है। And there are many, many तादाद को जाहिर करता है, बहुत से, नंबर को जाहिर करता है, many numbers तादाद को जाहिर करता है। और birds जो है ये ऑब्जेक्ट है, परिंदे। देयर आर मैनी बर्ड्स, वहाँ पर बहुत से परिंदे हैं। सो यू सी माय स्टूडेंट्स, हमने ब्यूटीफुली इस सेंटेंस में वी हैव ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड द यूज ऑफ मैनी इन दिस सेंटेंस। देयर आर मैनी बर्ड्स, वहाँ पर बहुत से परिंदे हैं। लेट्स राइट अनदर एग्जांपल। आइए एक और मिसाल लेते हैं। देयर आर मैनी, देयर आर many trees in the garden, there are many trees in the garden। So you see, there are many trees in the garden, there are, you see my students, there are many trees, बहुत से, many के माने उर्दू में
बहुत से के लिए जाते हैं। देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन, बाग में बहुत सारे दरख्त हैं। देयर आर मैनी ट्रीज, ये मैनी आ गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर मैनी ट्रीज, ट्रीज ट्रीज इज एन ऑब्जेक्ट, टी आर डबल ई एस, ट्रीज दरख्तों को कहा जाता है। देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन, बाग में बहुत सारे दरख्त हैं। इन द गार्डन, इन इज अ preposition, D is an article, D is an article, the garden, G-A-R-D-E-N, garden. There are many trees in the garden, बाग में, वहाँ बाग में बहुत सारे दरख्त हैं। G-A-R-D-E-N, garden की स्पेलिंग है G-A-R-D-E-N. There are many trees in the garden, बाग में बहुत सारे दरख्त हैं। There are many trees in the garden, बाग में बहुत सारे दरख्त हैं। Okay, my students, today we have discussed the use of adjectives in speaking. There are 3 adjectives we mentioned here: little, much, and many. Little, much, and many, 3 adjectives we have right here. We have written here 3 adjectives: little, much, and many. Little and much describe the quantity of things. Little and much describe the quantity of things. मिक़दार को ज़ाहिर करते हैं। There is a little water in the jug. There is a little water in the jug. जग में थोड़ा सा पानी है। And the next second sentence is there is little milk in the tea. चाय में दूध ना होने के बराबर है। There is little milk in the tea. चाय में दूध ना होने के बराबर है। चाय में दूध कलील है, चाय में दूध कलील है यानी कम है, चाय में दूध कम है। So this is little is an adjective of quantity. And next is, you see my students here, much. much जो है ये ज्यादा के मानों में लिया जाता है। in large quantity, in big quantity. much means in large quantity, in big quantity, मिक़दार में ज्यादा, in large quantity. so मिक़दार में ज्यादा जो है उसको हम कह सकते हैं in large quantity, ठीक है। much means large quantity, large quantity or big quantity. so we write here large, L-A-R-G-E, in large quantity. so here you see that in large quantity. so here you see that Q-U-A-N, in large quantity. so you see my students, यहाँ पे हमने much को डिफाइन किया है in large quantity, Q-U-A-N-T-I-T-Y, in large quantity. so और जो little है इसको less quantity, in less quantity. little जो है ये कम मिक़दार होती है, short, you can say short quantity. large and short quantity, in short quantity, short is the better synonym of little. in short quantity, S-H-O-R-T, in short, S-H-O-R-T, short, S-H-O-R-T, in short quantity. so little means in short quantity or much means in large quantity. so here you see that short quantity, Q-U-I-N, quantity, Q-U-A-N-T-I-T-Y, Q-U-A-N-T-I-T-Y, in short quantity. Here you see, so we have put it here. so this is the short quantity, and much is in large quantity. and after little and much we have many. many means in number, more in number, more in number. many means number में ज्यादा, तादाद में ज्यादा. many means तादाद में ज्यादा, ठीक है। बहुत से यानी तादाद में ज्यादा। many के मानी होंगे तादाद में ज्यादा। उर्दू में इसे हम लिखेंगे तादाद में ज्यादा। many तादाद
की, many की मिसालें हमने सेट की। there are many trees in the garden, बाग में बहुत सारे दरख्त हैं। there are many trees in the garden, बाग में बहुत से दरख्त हैं, बहुत ज्यादा दरख्त हैं। और दूसरी मिसाल हमने सेट की, there are many birds, वहाँ पर बहुत से परिंदे हैं, वहाँ पर बहुत से परिंदे हैं। So here see my students, our today's lesson is about three adjectives of quantity and adjective of number. Many is an adjective of number, ये तादाद को जाहिर करता है, ज़्यादा तादाद को जाहिर करता है। In a big quantity, you may say that big quantity, many describes a big quantity and much describes a big quantity, and many describes a big number. Sorry, many describes a big number and much describes a big quantity and little describes a short quantity. Little describes a short quantity, much describes a large quantity and many describes a big number. A big number, you can say तादाद में ज़्यादा, a big number. So we have set the examples for these three adjectives of quantities, and we have made a practice with this. I hope you will memorize all these sentences and these adjectives. I wish you all the best. I'll see you again. Goodbye.